वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल से देख लिया होगा, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ये अवनीत कौर इंस्पायर्ड मेकअप लुक। सो गाइज, यहाँ पर ये जो लुक मैंने क्रिएट किया है, तो इस लुक के पिक्चर मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। तो उनकी ये पिक्चर मैंने उनके इंस्टाग्राम से ली थी और मुझे वो लुक काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। सो आई थॉट कि मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। सो गाइज, अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने उनका ये लुक कैसे क्रिएट किया है, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले मैं अपने बालों को टाई कर रही हूँ ताकि मेकअप करते हुए ना फेस पे ना है। इट्स माई मेकअप। सो सारा स्टफ मैंने जो भी इस वीडियो के लिए मुझे यूज़ करना था सभी मैंने ले लिया है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का स्पॉटलाइट इल्यूमिनेटिंग लोशन है ये, क्योंकि अवनीत कौर की ना स्किन उसमें काफ़ी ज़्यादा इल्यूमिनेटिंग लग रही है, चमकती हुई। सो उसी तरीके से मैं अच्छे से इसे अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। वो प्राइमर में यूज़ कर रही हूँ कलर बार का मेकअप फिक्सिंग स्प्रे। नाउ बेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का कैमोफ्लेग कंसील पैलेट है ये। इसमें मेरी शेड है लाइट क्लियर, एज यू कैन सी। सो अकॉर्डिंग टू माई स्किन टोन आई एम यूजिंग दिस शेड। नाउ गाइज, इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर, जो कि मैंने लिया था मिनीसो से, और इसमें मेरी शेड है 2। नाउ नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का लग्जरी बनाना पाउडर। नाउ गाइज, नेक्स्ट मैं कर रही हूँ ब्रॉन्जिंग। सो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ आई लव रेवोल्यूशन। तो ये है ब्रॉन्जर वॉर्ड्रॉप। सो आई एम यूजिंग दिस शेड। नाउ नेक्स्ट फॉर ब्राउज में यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड के अल्टीमेट ब्राउ किट इन द शेड 01। फॉर आई मेकअप में यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का रोज गोल्ड पैलेट। फॉर ट्रांजिशन शेड आई एम यूजिंग सैंडलवुड शेड। सो गाइज, फॉर आई मेकअप मैंने जस्ट बेसिक्स आई मेकअप किया है और मैंने 2 शेड्स का यूज़ किया है। फर्स्ट वन इज पिंक डायमंड और उसके ऊपर मैंने लगाया है ये डॉल फेस कलर। नाउ नेक्स्ट आई एम यूजिंग स्टेकर की लाइनर। आफ्टर दैट मैं यूज़ कर रही हूँ मिलानी द बिगर लैशेस मस्कारा। L'Oreal Paris lipstick in the shade 121 I choose. And guys, last I'm using 2 shades 121 and 127 for my blush के साथ exactly match करेगा। सो ये ऑरेंज शेड में है। एंड आफ्टर दैट मैं यूज़ कर रही हूँ ये पिंक शेड। सो बोथ शेड्स को मैं मिक्स कर रही हूँ इस तरीके से। नेपल ऑफ द चीक्स पे अप्लाई कर रही हूँ।
एंड गाइज लास्ट टाइम यूजिंग कलर बार का मेकअप फिक्सिंग स्प्रे। सो गाइज दिस इज द फाइनल मेकअप लुक एंड आई रियली होप कि आपको मेरा ये अवनीत कौर इंस्पायर्ड मेकअप लुक पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। सो मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।